Assalamu alaikum, beta. In this video lecture, I will deliver the lecture on Introduction to Clinical Genetics. Okay. So, beta, in this lecture, there will be very important terms related to genetics, the fundamentals of the genetics. Let's start with it. Beta, the very first thing is what is genetics? Genetics is, in easy explanation, it is the study of individuals specific genes and their role in inheritance. ओके सो बेटा फर्ज करें ये आपका आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं और हर सेल के अंदर जाहिर है जो न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर जो जो जीन्स मौजूद हैं डीएनए के अंदर उन जीन्स को स्टडी करना और वो जीन्स इनहेरिटेंस में क्या रोल प्ले करते हैं। इनहेरिटेंस किसी भी चीज की हो सकती है, इनहेरिटेंस ऑफ सम ट्रेड्स, जैसे कि टॉल होने का ट्रेड, फेयर स्किन का ट्रेड, इसी तरीके से कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि जीन्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ओके, so genetics is the study of individuals' specific genes and the role of genes in inheritance. Okay, inheritance of anything, like for example, inheritance of some rare monogenic disorders, for example, thalassemia and cystic fibrosis का जो जीन है वो inherit होना। Okay, so इन तमाम चीजों की स्टडी को बेटा हम genetics कहते हैं। Yeah. Now another term is what is genomics. What is genomics? It is the study of an organism's entire genetic makeup. Okay. By the way, what is this entire genetic makeup called? It is the genotype. It is the genotype of the individual. The entire genetic makeup is called genotype, and the study of the genotype is genomics. So, in brief explanation, genomics is the study of an organism's entire genetic makeup and how genes interact with each other and with environment. Okay, right? So, did you understand the difference between genetics and genomics? The genetics is to study the genes and their role in inheritance of whatever thing. Okay, it may be any specific trait, good or bad, any disease. Okay, as I mentioned here. Genomics is the study of the entire genetic makeup and how two genes interact with each other and with environment. Okay, so there is a little difference kind of. Okay, yeah. Now let's come to term number 3, that is what is gene. Gene is the basic fundamental unit of the heredity. Every system, obviously beta, it has its own unit. The unit of the heredity is gene. ओके, जिन लोगों को बहुत ही बेटा बेसिक्स नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो आपका डीएनए होता है वो कंपोज्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स पे। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं डीएनए। ओके, फर्ज करें ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, और हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं और वो आई होप बेटा आपको पता होंगे कि हर न्यूक्लियोटाइड में कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक पेंटोज शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजिनस बेस होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक साइंस है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा यही मिलके जीन बनाते हैं। फर्ज करें 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, ये एक जीन हो गया, या मुमकिन है कि 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, उसको हम एक जीन कहते हैं। ठीक है, or by the way, there in the human genome, there are approximately 20,000 to 25,000 genes. Please beta, do remember this point. Human genome में कितने genes होते हैं? 20,000 to 25,000 genes. Okay, this is very much important point for your exam purpose. Okay, it seems kind of statics, but it is very important for your exam purpose. 20,000 to 25,000 genes in entire human genome. Few more concepts, let's see. Okay, yeah, I hope you can see better.
genetic variation concept, some concepts of genetic variation you will better understand when I take you into deep into the concepts. Sequence of the nuclear DNA is nearly 99.9% identical between two humans. You and I share how much the same DNA. Up to 99.9% of DNA is similar between you and me. Okay, between two humans, the DNA is similar up to 99.9%. The difference is of only 0.1%. I am taller than you. You are more fair skinned than me. I am having kind of blue eyes. You are having green eyes. This is due to that 0.1% change. This is due to 0.1% change. Otherwise, we are 99.9% identical at the DNA levels. Okay. Yeah, some DNA sequences differences have little or no effect on phenotype. Um, obviously, that some DNA sequences there are in the humans जिनका phenotype पे कोई असर नहीं पड़ता, जो express नहीं होती, ठीक है, and others are directly responsible for causing disease. आप फर्ज करें ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम ए का नाम देते हैं, और ये एक डीएनए सीक्वेंस है, इसको हमने बी का नाम दे दिया. ओके. दोनों में ज़ाहिर है डीएनए सीक्वेंस है बेटा, तो अपने अपने जीन्स होंगे इसमें भी और इसमें भी अपने अपने जीन्स होंगे. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीएनए सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल ये वाली डीएनए सीक्वेंस ये एक्सप्रेस ना करे, यानी कि लेट सपोज फर्ज करें इस डीएनए सीक्वेंस का काम था, जस्ट फॉर एग्जांपल इस डीएनए सीक्वेंस का काम था आपकी स्किन का बहुत ज्यादा डार्क होना, फॉर एग्जांपल. तो मुमकिन है कि ये डीएनए सीक्वेंस एक्सप्रेस ना हो और कोई इफेक्ट ना आए इस डीएनए सीक्वेंस का आपकी फिनोटाइप पे. ओके. लेकिन ऐसी बेटा सिचुएशन में कुछ ऐसी डीएनए सीक्वेंसेस भी होती हैं जिनका आपके फिनोटाइप पे इफेक्ट आता है, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस के जीन्स मौजूद हो सकते हैं इसके अंदर. सो दे मे प्रेजेंट, ओके, दे मे बी एक्सप्रेस्ड, राइट. सो देर आर टू डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज. एक एक्सट्रीम क्या है कि एक डीएनए सीक्वेंस है और उसका आपकी फिनोटाइप पे कोई असर नहीं हो रहा, और उसके कंपैरिजन में एक बेटा डीएनए सीक्वेंस है जिसका आपकी फिनोटाइप पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है, ठीक है. सो दीज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ काइंड ऑफ योर डीएनए. ओके. Yeah, okay, these all are the same things which I discussed. Now, two very important terms ahead, beta: exomes and genomes. Two very important terms. Genome is beta your entire genetic makeup. Entire genetic makeup is genome. Yeah, entire genetic makeup is, yeah, genome is entire genetic makeup. And you remember the study of the entire genetic makeup is called genomics. I just told you genomics is the study of entire genetic makeup, and the entire genetic makeup is called genome. Okay. And exome is the part of the genome. It is like, let me tell you, it's like, let me give you an example. Genome is a complete book. Genome is a complete book, and exome is a little chapter in that book. Okay. So exome is the entire genetic makeup. Sorry, genome is the entire genetic makeup, that is book, and exome is a little chapter inside that. Exome is just a little portion of the genome, little component. Okay. So this is the difference between these two, beta. Do keep in your mind. Okay. Okay. Now, beta, at page number 2, in the same topic, we will here study that what are the medical applications of genetics and genomics. Where can we apply the study, this study in the medical science, and clinical utility of genetic evaluation? Where in the clinics genetic evaluation is utilized? Okay, where in the clinical science genetic system and genetic evaluation is utilized. Let me first tell you the medical application of genetics and genomics. Genetics और genomics को पढ़ना क्यों जरूरी है
और उनकी मेडिकल साइंस में क्या एप्लीकेशन है, उनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, डायग्नोसिस ऑफ रेयर मेंडेलियन और मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। ओके, जो बहुत रेयर मेंडेलियन और मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा, उनको आप क्विकली डायग्नोस कर सकते हो इन इसकी जेनेटिक्स और जिनोमिक्स की मदद से। फर्ज करें अगर आपके सिस्टम में जेनेटिक्स और जिनोमिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप फर्ज करें आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें जेनेटिक्स और जिनोमिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। व्हाट इज जेनेटिक्स? द स्टडी ऑफ द एंटायर जेनेटिक मेकअप and the inheritance and the role of genes in inheritance. This is what I told you. And what was genomics? A study of the entire genetic makeup and how your genes interact with each other and the environment. आप बेटा फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि ये दोनों चीजें आपकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या आप इतने बड़े और रेयर जो नेस्टी सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, क्या इनको आप डायग्नोस कर पाएंगे वक्त पे? नहीं। जब डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो फार्माको जीनोमिक्स भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फार्माको जीनोमिक्स क्या है बेटा? ये एक ड्रग है, ठीक है, ये एक ड्रग है और फर्ज करें ये एक जीन है, ये एक जीन है। इस ड्रग का इस जीन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं फार्माको जीनोमिक्स। अगर आप जब तक आपके पास जेनेटिक्स और जीनोमिक्स नाम की कोई चीज नहीं होगी आपके सिस्टम में, तो हाउ विल यू कम टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द जीन्स? आप तो ड्रग का इफेक्ट जीन पे तभी स्टडी कर पाएंगे ना जब आपको जीन की साइंस का पता होगा, जब आपने जेनेटिक्स और जीनोमिक्स अप्लाई की होगी। तो देख रहे हैं बेटा जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की कितनी जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं। जेनेटिक्स और जीनोमिक्स को स्टडी करके आप बड़े बड़े मेंडेलियन और जो मोनोजेनिक रेयर डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपने आपके सिस्टम में जेनेटिक्स और जीनोमिक्स अप्लाई होती है तो आप ड्रग का इफेक्ट देख सकते हैं क्या है जीन के ऊपर। ओके, एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल कैंसर ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये फर्ज करें कोई एक जीन है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन की वजह से बेटा जो बेसिक कार्सिनोजेनेसिस है वो ऐसे ही होती है कि जो आपका जीन होता है उसमें म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन की वजह से कैंसर डेवलप होता है, ट्यूमर डेवलप होता है, ठीक है। तो बेटा जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन से जीन में म्यूटेशन है तो आप इस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब फर्ज करें बहुत सारे जीन है ABCD और जो कैंसर हो रहा है वो जीन ए की वजह से हो रहा है, तो आप बेटा ट्रीटमेंट तब करेंगे ना जब आपको पता होगा कौन से जीन में म्यूटेशन है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो आप कैसे पता चलाएंगे? और जब पता चल जाएगा उसके बाद उस जीन के अंदर जो म्यूटेशन है उसको करेक्ट कैसे करेंगे? जब आपके पास सिस्टम में जेनेटिक्स और जीनोमिक्स होगी, ठीक है। So development of novel cancer treatments as well, and also understanding the pathophysiology of complex or polygenic disorders. There are so many disorders which are polygenic or complex. Okay, and to understand the pathophysiology of those disorders, genetics is applied, genomics is applied. Okay, right. And also finding the disease susceptibility genes for some complex disorders. ऐसे जीन्स का पता लगाना जो ससेप्टेबल हो, जो आगे चल के डिजीज करा सकते हैं। तो बेटा आप उन जीन्स का तभी पहले से पता लगा पाओगे ना जब आप जेनेटिक्स अप्लाई करोगे, जीनोमिक्स अप्लाई करोगे। ओके, yeah. Now, clinical utility of the genetic evaluation. Number one, accurate diagnosis and prognosis. If you use genetic evaluation, if you use kind of, let me tell you in easy words, that there are so many diseases which can be diagnosed and their prognosis can be made very much better by genetic evaluation. If you understand what gene is involved, if you quickly catch that, yeah, okay, out of these 10 genes, this gene number 5 is involved, then you will quickly diagnose the disease and you will, if you treat that disease by time, you will then have better prognosis. Okay. Yeah. And also
As I mentioned, the management and the surveillance for affected individuals. The management, obviously, surveillance of the affected individuals, and identify pre-symptomatic individuals in affected families. If let's suppose there is a family tree, if let's suppose there is a family tree and so many members in that family are affected, and if you want to know, if let's suppose this is you, okay, person A whose family is affected with a particular disorder, and you are very much worried about the same disease, that if you are if you are going to suffer from the same disease or not. If you are going to suffer from same disease or not, and you are not developing symptoms right now, by the way, but you are very much worried that in my family is suffering from, let's suppose, thalassemia or whatever disease, diabetes mellitus or anything, and you are worried if I am going to develop the disease or not. So identify pre-symptomatic individuals in affected families. ये पूरी affected family है बेटा, और ये प्री सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है, इसको भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि इसमें क्या वो जीन इनहेरिट हुए हैं, नहीं हुए, और क्या ये डिजीज को डेवलप करेगा, नहीं करेगा. दिस इज ऑल योर जेनेटिक इवैल्यूएशन दैट हेल्प्स यू. ओके. एंड द रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस टू कपल्स एट रिस्क. दो कपल्स हैं बेटा, एक कपल है, सॉरी, ए एंड बी, ओके, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर. They want to know if they should reproduce a baby or not. Are they at risk of developing a particular disease or not? How will you tell them? How will you tell a couple that your son is going to develop thalassemia? You need to study their genetics. If you do study their genetics, you will be able to tell them, okay, if you have intercourse and you have a nice little baby, he will be suffering from thalassemia or he will not be suffering from thalassemia. It's only possible if you study their genetics. And to study their genetics, sorry, and to study their genetics, and to study their genetics, you need to apply the study of genetics and the genomics. Okay, you need to apply the genetic evaluation, right? This is what I wanted to deliver you, but I hope you are clear with both these things. No explanation, to be honest, can be better than this. I have tried to cover, so this very much easy kind of couple of things in kind of explanation, which is very much helpful. Okay, now let's go a little ahead. A nice little concept of precision medicine. But a precision medicine now. Precision medicine refers to medical interventions specific to the patient for their specific disease. Okay, बेटा सादा अल्फाज में ये एक पेशेंट है, पेशेंट ए, जिसको एक स्पेसिफिक डिजीज है, फर्ज करें इसको ब्रेस्ट कैंसर है, और ये एक और पेशेंट है बेटा, पेशेंट बी, जिसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, और एक पेशेंट है, फर्ज करें पेशेंट सी, जिसको लंग कैंसर है. ठीक है. So what do you think? There should be a same treatment for all of these three, or there should be different specific treatment for all three? There should be specific treatment, na? There should be different specific treatment for the patient with the breast cancer, different specific treatment for the patient with the colorectal carcinoma, and the different very much specific treatment for the patient with lung cancer. So it is precision medicine that helps you to specify the patients and their treatment. So now let's read it very quickly, that precision medicine is the medical treatment or the medical interventions that are developed specifically according to the characteristics of the each individual patient. कि इसको कौन सी डिजीज है, क्या इसको लंग कार्सिनोमा है, क्या इसको ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है, और इसके दूसरे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और जो सारी चीज़ों की बेस पे हम उन पेशेंट्स को अलग करते हैं और उनके लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूज करते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली द प्रिसिजन मेडिसिन. सो प्रिसिजन मेडिसिन refers to medical treatment or intervention that are developed specifically according to characteristics of the each individual patient. Okay, and precision medicine is brought into action beta by the help of recent advances in genomics, डेटा एनालिसिस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, तो बेटा ये सारे सिस्टम्स हैं, जिनोमिक्स,
की तरक्की और डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ बहुत ज़बरदस्त इजाद हैं जिनकी मदद से हम प्रिसिजन मेडिसिन को एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन, प्रिसिजन मेडिसिन क्या होती है बेटा? ऐसा मेडिकल इंटरवेंशन, ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक हो, उसकी डिजीज को देखते हुए, उसके रिस्क फैक्टर और उसके जो बायोलॉजिकल मार्कर हैं, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए उस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट फिट होता है उसको डिसाइड करना, उसको डिजाइन करना इज द प्रिसिजन मेडिसिन। ओके, सो by the way, previously precision medicine was known as individualized or personalized medicine because it is referring to a specific individual. Okay, so it's not, wrong to call it individualized medicine. It can be called as individualized or personalized medicine, by the way. And precision medicine decides the medical treatment on the basis of this formula of companion diagnostic biomarker, that is referring to treatment plus diagnosis of the individual, that is equals to the companion diagnostic biomarker. You will better understand the concept of this precision medicine next. Okay, let me just take you to details of the precision medicine, then we will get back to this a little concept of gonadal mosaicism. Okay, right, there we go. I hope it is visible. If not, I can zoom into it. Right. So there is a paradigm shift in the treatment. There is a paradigm shift in the treatment. Let me tell you what I want to say. सबसे पहले क्या होता था बेटा? There used to be one size fit all medicine. वन साइज फिट ऑल मेडिसिन। जितने भी पेशेंट थे इसमें उनके लिए एक ही तरह की मेडिसिन, सॉरी, उनके लिए एक ही तरह की मेडिसिन। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वन साइज फिट ऑल मेडिसिन? ऐसा कैसे मुमकिन है कि सारे जो पेशेंट है इस बंच के अंदर वो एक मेडिसिन से सही हो जाएं? तो बहुत मुमकिन है कि कुछ पेशेंट जो हैं ठीक हो जाएं, यानी उनको बेनिफिट मिले, और बहुत मुमकिन है कि बेटा बहुत मुमकिन है कि कुछ पेशेंट जो हैं उनको बेनिफिट ना मिले, और बहुत पेशेंट हो सकते हैं जो एडवर्स इफेक्ट शो करें। अब मुमकिन है कि इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट जो हैं बेटा ब्रेस्ट कार्सिनोमा के हों, और कुछ पेशेंट जो है लंग कार्सिनोमा के हों, और कुछ पेशेंट बेटा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के हों। मुमकिन है ना? सो दिस इज इंक्लूडिंग पेशेंट्स with different type of the disease. Some are having breast cancer, some are having colorectal carcinoma, and some are having lung cancer. Okay, they all are different. Do you think it is possible to fit a single medicine for all these individuals? Breast cancer relieved by the same drug which is relieving colorectal carcinoma, it is not possible. There will be some people who will be benefited, okay, but some will not be benefited, and even some will show some adverse effects. So this is what used to be before, but now after this concept of one size fit all medicine, it shifted towards stratified medicine. Stratified medicine later developed into precision medicine. Precision medicine is the last station which describes the specific treatment for a specific disease of the patient. Okay, so there are some actually factors which I will zoom in and will tell you about the stratified medicine and then the precision medicine. अब जाहिर है बेटा ये बहुत सारे पेशेंट है, कुछ को ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ को लंग कैंसर है, कुछ को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। सबके लिए एक ड्रग नहीं हो सकती, सबके लिए एक ड्रग नहीं हो सकती। तो पहले हम क्या करें, इनके अंदर बेटा जो पेशेंट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट्स को अलग अलग करें। हम फर्स्ट करें ये ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हमने अलग कर लिए, ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट हमने अलग कर लिए, ये लंग कैंसर के पेशेंट को अलग कर लिया हमने। तो पहले तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा ताकि इनका ट्रीटमेंट अलग अलग से डिसाइड हो सके। सो पेशेंट्स आर एक्चुअली ग्रुप बाय डिजीज सब टाइप कि इनको डिजीज कौन कौन सी है। फर्स्ट करें, इसको ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, इसको लंग कैंसर है। रिस्क प्रोफाइल क्या है सबका, किसके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किसके अंदर कम है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स क्या है,
और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कौन ज्यादा सीवियर फीचर्स के साथ आ रहा है, कौन माइल्ड फीचर्स के साथ आ रहा है। बायोमार्कर देखना जरूरी है कि फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पेशेंट है जो कि ईआर पॉजिटिव है, और एक पेशेंट है जो फर्ज करें ओके वो साइटोकेराटिन पॉजिटिव है, वो साइटोकेराटिन पॉजिटिव है। अच्छा, जो पेशेंट ईआर पॉजिटिव है उसको ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, और जो पेशेंट साइटोकेराटिन पॉजिटिव है उसको लंग कैंसर वाले पेशेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि साइटोकेराटिन लंग कैंसर के केस में पॉजिटिव होता है और ईआर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के केस में पॉजिटिव होता है। ओके, तो बायोमार्कर्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि बेटा बायोमार्कर आपको हेल्प करेंगे पेशेंट को सब ग्रुप उसको पेशेंट्स को ग्रुप करने में। जिन पेशेंट के अंदर ईआर पॉजिटिव है उसको ब्रेस्ट कैंसर की कैटेगरी में रख दो, जो पेशेंट साइटोकेराटिन पॉजिटिव है उनको लंग कैंसर की कैटेगरी में रख दो। तो बेटा ये सारी चीजें बायोमार्कर, मॉलिक्यूलर काइंड ऑफ सब पॉपुलेशन, क्लिनिकल फीचर, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप पेशेंट को पहले ग्रुप आउट करें, ठीक है, उनकी डिजीज की बेस पे उनको अलग अलग करें। फिर उसके बाद आती है प्रिसीजन मेडिसिन, जो मजीद कुछ फैक्टर्स को यूज करती है और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बनाती है उसके लिए। और आप नीचे देखें कि ईच पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे उनके लिए अलग ट्रीटमेंट, लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए अलग ट्रीटमेंट, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट्स के लिए अलग डिवाइड अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ओके या ओके। और जो प्रिसीजन मेडिसिन जो बेटा फैक्टर्स यूज करती है, लेट मी क्विकली टेल यू, जिसमें आ जाता है पेशेंट का लाइफ स्टाइल, उसकी जेनेटिक्स, और उसकी प्रेफरेंसेस, हेल्थ हिस्ट्री प्रीवियस क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या है प्रीवियस, पेशेंट की कंप्लायंस और एक्सोजिनस फैक्टर्स, ये सबको देखते हुए प्रिसीजन मेडिसिन एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिसाइड करती है जो स्पेसिफिक डिजीज के लिए होता है, और वो बेटा वो डिजीज जाहिर है उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। सो इन द एंड precision medicine ensures the delivery of the right treatment, right intervention to the right patient at the right time. You understand? Now you tell me which one is better, this one or this one? Obviously this one, because this is the type where one size fit all medicine, single medicine for all the patient, and that's not possible. Only few patient will be benefited, rest will not be benefited. Precision medicine is the boy really helping you out to provide the specific treatment to a specific individual according to their disease and all these factors. So precision medicine is this young man, okay, this really good kind of success in the clinical genetics, the precision medicine that ensures delivery of the right intervention to the right patient according to their disease and all the factors at the right time. Okay, so hope you are better clear with this concept of प्रिसीजन मेडिसिन। तो ये एक पैराडीम शिफ्ट आया है, पहले ये होता था, अब ये पैराडीम शिफ्ट आ गया है, एंड we are in the latest market of the genetics. Okay, now we are done with the precision medicine. Let's get back to the concept of gonadal mosaicism. Gonadal mosaicism. Okay, gonadal mosaicism. What is gonadal mosaicism, beta? Gonadal mosaicism, a term refers to the presence of the pathogenic variant. आप फर्ज करें अच्छा मैं पहले वर्ड को ब्रेक करता हूं। gonadal refers to your germ cells in the gonads, okay, and mosaicism एक इंग्लिश वर्ड है बेटा। mosaicism, it is an English word, okay, there is no rocket science. mosaicism का मतलब होता है, आप फर्ज करें ये एक बहुत बड़ा समंदर है पानी का, ठीक है, और इसके बीच में एक आइसबर्ग है, एक बर्फ का गोला है बड़ा, दिस इज मोजेक। ओके, तो इसी तरीके से आप फर्ज करें ये आपके सेक्स सेल्स है, बहुत सारे सेक्स सेल्स हैं, और उनमें बहुत ओके लेट्स सपोज इसके अंदर 100 सेक्स सेल्स हैं, और 100 में से 20 के अंदर जो है 100 में से 80 जो है नॉर्मल है, बाकी 20 के अंदर जो है कुछ पैथोजेनिक फीचर्स मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़े समंदर के अंदर इस छोटे आइसबर्ग का मौजूद होना, इट इज द मोजेक,
Okay, this is the mosaicism, that is presence of the pathogenicity, presence of the pathogenic variant in the ovaries or testes, not in the somatic cells. Okay, you can see here, gonadal mosaicism is a term that refers to the presence of pathogenic variant, some problem, some pathology in the ovaries or the testes. And the gonadal mosaicism occurs when some of the sperm cells in the testes or some of the egg cells in the ovaries carry a pathogenic variant that is not found in somatic or other cells of the body. Okay, so yeah, this is the gonadal mosaicism, beta. I hope you are clear with this. Let's go a little ahead. Okay, then is the beta pedigree nomenclature. Okay, we will talk about the nomenclature now onwards. So let me show you the picture.